Our today's topic is very common. It is very common topic, and we all have faced it, or we are going to face it, as parenthood is one of the important part of life. But the point is, every parent considers that yes, they understand the child. But do we really understand the child? Now let us go back to our own childhood. See, when we understand our own experience, when we understand our own things, then only we should be able to understand what is going on in others' life. Now, if you think about a child, the child is an individual. Every child is an individual. No matter what, no matter whether you have given birth to a child, you have raised a child, but at the end of the day, the child is an individual. Agreed, everybody? And I think everybody agrees with me, whether you say yes or you say no. Everybody is an individual in himself or herself, be it a 1-year-old kid or a 2-year-old kid, because they are just seeds. You have just implanted the seeds and giving the right conditions to them so that they can flourish in a whole tree, so that they can create a whole jungle for themselves. Now you all go back to your own childhood. Now one by one. See, this session will not be a monologue, it will be a dialogue. और हम यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम समझेंगे. गो बैक टू योर ओन चाइल्डहुड और मुझे जस्ट लेट मी नो yes it has happened or not. Were your parents very authoritative? क्या कंट्रोलिंग पेरेंट्स थे? किस किस के कंट्रोलिंग पेरेंट्स थे? You can just unmute and let me know. We are all here to discuss and we are all here to solve each other's issues. And then only I'll be able to guide you. Few of you have probably controlling parents. Few of you have probably very lenient kind of parents. Few of you probably have parents who were not interested, involved in their own things. And few of you probably had or have parents who are balanced. Now, when I say balanced means sometimes authoritative and sometimes considering your own emotions and feelings. Okay. Now the second question, all of you, just write down in the chat box if you do not want to speak. When your parents supported you and considered your emotions, were you happy at that point in time when you were a kid? Quickly, we are very few. Yes, Priyanka, please go ahead. Priyanka has raised the hand. Please go ahead. I think she's having some issue with the audio because she's not. Priyanka, you can write down in the chat box. Anybody who has some issue with the audio, you can just write down in the chat box. Yes. I cannot see anybody's response. Were you happy when your parents supported you? Were you happy when your parents understood your emotions? If you ask me, yes, I would say yes. When my parents supported me, when my parents understood my emotions, I was happy. Right?
But there have been times when I thought that my parents are not very supportive. They're very controlling. So probably you also have experienced it. Yes or no? Let's go back to our own childhood. We all have seen enough. And I consider that whoever has joined here is probably a parent, and that is why you have joined. And you are trying to understand your child. See, when a child is born, the child is just like an A4 size sheet, blank sheet. And we parents and anybody who is around the kid is writing on that A4 size sheet. That is the life of your kid. You're writing on it. Your kid is learning through that. So what your kid is learning, what your child is learning depends on the environment, depends on the people who are around your child. And we'll talk about it in the session. Let us just understand our own experience first. When I was a kid, my mother had a very authoritarian type of trait. Now, when I say authoritarian, is sometimes controlling, but considering the emotions and feelings of the kid. That is authoritarian, and guiding and supervising your kid all the time. But giving your child a free hand to do things. This is what the authoritarian type of parenting means. मगर हम कितने लोग आज की डेट में when we are pressed by certain conditions, when we are pressed by the work-life balance, हम कितने लोग आज की डेट में इस तरह की पेरेंटिंग कर पा रहे हैं? Now you have gone back to your childhood. The moment I said go back to your childhood, immediately you have gone back to your childhood. Whether you have answered here in the chat box, you have not answered in the chat box, still you have visited your past, your childhood in that moment, because this is how human behavior is. This is how human mind works. We do go back to our childhood, and sometimes a reaction is frustrating, sometimes a reaction is aggressive, sometimes a reaction is very calm, sometimes a reaction is very understanding. Remember, it's a chain, and we need to understand the chain. Now probably you must be thinking, topic to understanding your child through their eyes hai, and she's talking about our childhood. Understand, your child is dependent on you till the time the child becomes an adult. The psychology of a child is totally dependent on the people around him or her. So we are the one who are carving their lives. We are the one who are carving their personality. आप किस तरह की personality अपने बच्चे की करना चाहते हो? It depends on you. Provide that environment. And today I'll let you know how to go about it. But before that, I just forgot to introduce myself, thinking that you have already attended my webinars, and I have not introduced myself. I'm Dr. Deepika Chamoli. I am the founder and director of Speaking Cube Mental Health Consulting Foundation. And we organize monthly free webinars on different topics to create awareness regarding mental health, different topics of mental health. So parenting is also one part of mental health. Your child's journey is also one part of mental health, because your child is a future citizen. आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा इस सोसाइटी का एक पार्ट है. So if we want to create a good society, we have to create
a good human being. We have to create, when I say good human being, every human being is good. But then क्या हमको गलत करने पर मजबूर करता है? गलत करने पर मजबूर करता है आपके पुराने इमोशंस, आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके ट्रॉमास जो आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए हैं। तो कैसे अपने बच्चे के ट्रॉमास को आप ठीक कर सकते हो, कैसे उसके इमोशंस को समझ सकते हो? एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड थ्रू देयर आईज. We need to understand their perception. We feel that we understand their perception, but we do not. We try, but we cannot. Now, why we cannot? Again, we'll talk about it. Let's go back. Go back to the time when a child is born. जब एक बच्चा बड़ा होता है, you need to understand how the child develops, right? उसका cognitive यानी mental और उसका social यानी कि सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। जब बच्चा पैदा होता है, just like a blank sheet of paper, and as per one of the great psychologists, उन्होंने कहा कि बच्चे के जो ट्रेट्स हैं, बच्चे के जो वर्च्यूज हैं, यानी कि जो गुण आते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेन थिंग्स. वो क्या हैं, उसके इर्द गिर्द क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो समझता है. एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि 0 डे से लेकर, यानी कि डे 1 से लेकर 18 महीने तक बच्चे में एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप होता है. कैसे डेवलप होगा? नाउ व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मदर और द प्राइमरी केयरटेकर. ईदर द मदर इज अ प्राइमरी केयरटेकर or the maid is primary caretaker, that means the nanny is primary caretaker, or the grandmother can be the primary caretaker or somebody else, but mainly ये तीन ही होते हैं ज्यादातर. Now the child is dependent on you for food and for stool, that means सुसु potty and खाने के लिए बच्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है. Totally dependent. The child cannot do anything. The infant cannot do anything between 0 to 18 months. वहां पर when you are not paying due heed, due attention to the child, तो infant, उस छोटे से infant ने क्या अपने दिमाग में सोचा, क्या प्रोसेसिंग हुई? मैं रोता रहूंगा मगर मेरी मदर, मेरी प्राइमरी केयरटेकर मुझे दूध नहीं देगी टाइम पर, थोड़ा कर देगी. मैं सुसु करूंगा बट वो मेरा डायपर थोड़ा टाइम लगा के चेंज करेगी, ये ध्यान ही नहीं देगी, ये पता ही नहीं होगा. सो व्हेन द चाइल्ड इज इग्नोर्ड, not intentionally, no mother does it intentionally, not intentionally but unintentionally, when it happens, child develops mistrust. ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो वो लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता. किसी पर भी विश्वास करने के लिए उसको बहुत मुश्किल होती है. इसको कहते हैं मिसट्रस्ट. अगर उसको सही टाइम पर सही चीजें मिल जाएं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डेवलप होता है. उसके लिए पूरी दुनिया अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, सब लोग अच्छे होते हैं, हर किसी पर बहुत इजीली विश्वास कर सकता है. मगर समझें कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. हर इमोशन का एक्सेस अच्छा नहीं है, तो हमको बैलेंस बना के चलना होता है. हम इमोशंस की बात करते हैं बट हम कहते हैं यू हैव टू बी इन अ बैलेंस स्टेट. कीप योर रैशनल आल्सो रेडी along with emotions when you are taking a decision. इसी तरह से बच्चे के लिए भी आप में ट्रस्ट डेवलप होता है, आप में मिसट्रस्ट डेवलप होता है. अगर टाइमली सब कुछ बिना रोए आपको सब कुछ मिल रहा है तो एकदम एक्सेसिव ट्रस्ट डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप एक इस तरह के एडल्ट बनोगे जो हर किसी पर विश्वास करता है. और जब नहीं मिलता टाइमली सब कुछ तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है. और ये आपके मैरिड लाइफ, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसके फ्रेंड सर्कल, इसके मैरिड लाइफ, इस बच्चे के जो अपने बच्चे होंगे, उन सारे रिलेशंस में ये आपको मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा. और ये आप कहीं मत जाओ, सब अपने अंदर देखो.
कि आप किस तरह के हो और क्यों हो। जब आप ये देखोगे कि आप किस तरह के हो और क्यों हो, तो आपको अपने बच्चे का भी समझ में आएगा। अब एक मिसट्रस्ट वाला एडल्ट अपने बच्चे से कैसे ट्रीट करेगा? वो अपने बच्चे की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। और जब वो अपने बच्चे की किसी भी बात पर यकीन नहीं, child is going to develop positive emotions? No, the child will not, because this is what you are feeding unintentionally. आप उसको इस दुनिया में जीना नहीं सिखा रहे हो, आप इसको एक कोने में खड़ा रहना सिखा रहे हो। I hope you are getting my point. Now again go back. ये तो होता है 0 से 18, तो हमको क्या करना है? We need to create an environment. Okay, let the child cry for some time and then give. If a mother does this, or if the primary caretaker does this, okay, the child needs food, the child is crying or the infant is crying. Let the child cry through 2-3 times and then give. On demand. This is what is known as on demand feed. If we are changing the diapers on demand, if we are giving feed on demand, then things will be balanced. Do that. If you are a new mother or if you are a new parent. Then second, 18 months to 3 years. आपका बच्चा टॉडलर हो चुका है और थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। आप खुद अपने आप को देखो। आपको याद होगा जब आप 2-3 साल के थे, अगर इधर उधर चीजों को छेड़ते थे तो पेरेंट्स ने आपको टोका टाकी की। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको टोका टाकी की है, then you will develop a kind of inferiority in you, that because the infant has developed the inferiority in herself or himself. Now, when this kind of adult with inferiority complex grows into an adult, when this child grows into an adult, यहाँ पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी, जिसमें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो हो जाएगा। आप किसी भी चीज में 100% नहीं दे पाओगे, अपने आप को हमेशा दोष दोगे, अपने आप को हमेशा ब्लेम करोगे। नाउ लुक एट योरसेल्फ, आर यू डूइंग दैट? आर यू डूइंग दैट? इफ सो, गो बैक। क्या आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नैगिंग है? द वर्ड इज नैगिंग। हर चीज में टोका टाकी करते हैं, ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। नाउ हियर द पॉइंट इज, इफ यू आर लेटिंग द चाइल्ड एक्सप्लोर थिंग्स, और अगर वो कोई चीज तोड़ रहा है और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे हो, ओके कोई नहीं, बच्चा है, ऐसे ही करेगा, छोड़ दो, ये भी गलत है। अगेन यू हैव टू बी बैलेंस्ड। बच्चे को प्यार से समझाना है, बेटा आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। There is always a way to make them understand. Be balanced. अब या तो यहां से इस सेकंड स्टेज से डिस्ट्रक्टिव नेचर होगा या फिर इंफीरियोरिटी डेवलप होगा। और अगर दोनों बैलेंस में रहे तो इंडस्ट्री आ जाएगा। मतलब द चाइल्ड विल बी एबल टू टेक चार्ज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कर रहे हो, राइट? और आप एक कॉन्फिडेंट एडल्ट बनाओगे जिसकी में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। सो ऐसे लोग देखो जिनमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी है, और ऐसे लोग देखो जो कि बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव है। कहीं बाहर मत जाओ, अपनी लाइफ में देखो। I am going to discuss only 4 stages. Now coming on to 3 to 5 years, when the child is going to go to the school. स्कूल में जा रहा है, बच्चों से मिल रहा है, टीचर्स से मिल रहा है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम द चाइल्ड इज एंटरिंग अ डिफरेंट एनवायरमेंट ऑल टुगेदर। आपके फैमिली एनवायरमेंट से निकलकर एक स्कूल एनवायरमेंट में जा रहा है, और वहां से बच्चे में क्या आएगा? इनिशिएटिव लेने का ट्रेड डेवलप होगा। एंड इफ द टीचर
if the teacher is not very supportive, if the teacher is not very supportive in so many ways, academically, जब बच्चा खेल रहा है तब, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तब, and the way of communicating things is different, different means negative, तो बच्चे में फिर से एक हिच आ जाएगा, एक inferiority और develop होगी, and the child will not be able to take the initiative later on. So there are people who are very intelligent but they don't take the initiative. ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने इर्द गिर्द देखने के लिए मिलेंगे. Look into your own life again. बहुत सारे लोग हैं, they're very intelligent but then they do not want to take any risk in life. And it's not about risk, it's about initiative. We're talking about initiative. And later on, when we become an adult, we always say risk. Right? Now, come back to 5 to 11 years. 5 to 11 years में बच्चा बड़ा हुआ, अपने abstract thought process बढ़ गए, और जब abstract thought process आप चीजों को समझना शुरू कर दिया, आपने emotions को समझना शुरू कर दिया, then you start with a sense of competition around. और अगर ये कंपटीशन वाली चीज या तो कंपैरिजन आया या कंपटीशन आया, और कंपटीशन अगर अनहेल्दी आया, then the child will keep on comparing himself with others, or you will keep on comparing the child with others, which actually happens. देखो वो तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? और जब आपने ऐसा किया तो कंपटीशन से वो कंपैरिजन आया, कंपैरिजन से जेलसी आ गई, and then bacha becomes an adult who is jealous. Again, negative emotion. Now you have already understood these 4 stages, and 11 to 18 जो आपका teenage वाला phase है, there is a role confusion. कभी आप कहते हो बच्चे को you are a kid, so don't talk like an adult. As such, bacha is going to the hormonal change, to a drastic change in life. From a child, he is becoming an adult. Now he is ready to take the role of a father or a mother. He is trying to learn things, but at the end of the day, you are not supportive and you are not supporting the child in different ways, mentally, physically, socially, financially, intentionally or unintentionally. Again, underlined. तो यहाँ क्या होगा? There will be a role confusion. So there are confused adults. Again, look at yourself. There are confused adults and there are adults who are very decisive. They are able to take decision. Confused adults are not able to take any decision in life. They always look up to others or their partner or their parents. ये सही किया है, गलत किया, सही किया है, गलत किया. आप किस तरह का बच्चा चाहते हो, जिस तरह का बच्चा चाहते हो उसी तरह की अपब्रिंगिंग करो. See, this is what has happened with me, and this is what I have experienced in life. Think like that कि हमारे साथ ये हुआ है, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना है. So this is how the positive traits develop in a child. अब ये पॉजिटिव ट्रेट डेवलप करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड विद द चाइल्ड्स आई. बिना उसके नहीं देख सकते हो. What kind of, now the question is, okay, understood, ये चीजें हमारे बच्चे में ये ट्रेट्स डालेंगी, and if I want to develop my kid into a very confident adult, into a good leader, what should be done? Everything should be balanced. ये 4 स्टेजेस संभाल लो 18 साल तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 11 साल तक. मेक योरसेल्फ अप्रोचेबल. कैसे अप्रोचेबल होगा? द क्वेश्चन इज कैसे अप्रोचेबल होगा. नाउ फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द 4 काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन. द फर्स्ट पेरेंटिंग, 4 तरह की पेरेंटिंग हो सकती है इस पूरी दुनिया में. 4 तरह की पेरेंटिंग, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, बट देन
चार तरह की मेन पेरेंटिंग है. पहला, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, वेरी कंट्रोलिंग पेरेंट. Don't do that. No, I'll slap you, hit you, right? You are punishing the child for everything. You are very controlling. आप चाहते हो my way or highway. Authoritative parenting का एक ही लाइन होता है, my way or highway. This meeting link will expire in 5 minutes because it's Zoom. So if it expires, the meeting will stop. So I request the people to join the same link again because it will stop and I'll have to restart the meeting. Because it's just showing that 5 more minutes are left for this meeting time. Okay. Okay. Okay, yes. Yes. So now, coming back. Where were we? Authoritative parenting. Now in authoritarian parenting, the parent is very controlling. आप चाहते हो my way or highway, but you are ignoring the emotions and feelings of the child. Please keep yourself on. Yes. आप चाहते हो कि बच्चा जो कहता है वो गलत है, but it is not that always. You should see the situation, or you should think about the condition from the child's perspective as well. एक बच्चा कैसा सोचता है, उसकी सोच कितनी है, कितने उसके emotions हैं. And then consider the emotions and feelings of a child and then solve the situation, then solve the problem. It is very important. And that is why we say authoritarian parenting is not good. It is not a good style of parenting because you are always controlling your child. How can a child become an adult who can take the decision on his own or who can solve the problem on his own? No, the child cannot take the decision then. If your parenting style is authoritarian parenting style, don't do that. Never do that. If you're doing, please stop that. Nowadays, the parents are very aware. They have read things. They are reading things. They are attending webinars like this. And that's why authoritarian parenting is reduced. Now the second parenting is authoritative parenting. Here, the parents still are controlling. They are controlling, but they take care of the feelings and the emotions of the child. बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझकर चीजों के लिए डिसीजन लेते हैं. सपोज इफ योर चाइल्ड वांट्स टू गो समवेयर, उसको समझाओ, प्रोज एंड कॉन समझा दो, कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी कहो. ओके, आप जाओगे, आप मुझे, यू आर गोइंग टू कॉल मी आफ्टर एवरी 1 hour, आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि आप कहाँ हो. डू नॉट स्टॉप द चाइल्ड कि नहीं, बाहर माहौल खराब है तो आपको जाना नहीं. Because the moment you will stop the child will be more curious. And he is going to explore more. Again, think about yourself, what you have done. क्योंकि हर किसी की जिंदगी में, चाहे मेरी 60 years की एज हो, चाहे मेरी 70 years की एज हो, चाहे मेरी 40 years की या 30 years की एज हो, I have experienced this childhood. So if I have done certain thing, at that point in time, if I have reacted in that manner, the child will also react in a manner, no? But why are we forgetting it then? Why are we forgetting it when it is coming to my child? Again, an example. It is you who has given an access to iPad, to laptop, to TV, to mobile, right? And now you are blaming the child that the child is becoming addictive, right? Yes or no? Just because the parents sometimes want me time.
Therefore, they have given the video game to the child. And now when the child is so much involved in the video game, it is hurting. So at the end of the day, you have to balance things out. Now there are so many patients and parents who come to me saying that हमारा बच्चा तो इंटरनेट एडिक्शन में है. बट इंटरनेट एडिक्शन क्यों होगा? Why there is social media addiction? Because the child is not getting what he wants from the parents or from the family members. Because a distance you have created has become so strong that the child thinks that my parents are not approachable at all. So I can do whatever and whenever on the social media. I can express myself on social media. So it is not. We were talking about the authoritarian parenting, which was not good. And now authoritative parenting, where things are, you have the control, you have the remote control of their life because your child is a child. They are not an adult, right? You have to take the charge of their life. But at the end of the day, considering their feelings and emotions. जब आप उनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स को कंसीडर करके चीजें करते हो, कुछ चीजों के लिए ना कहते हो, कुछ चीजों को उनको सिखाते हो, उनको आप क्वालिटी टाइम देते हो, then it is called authoritative parenting, which is considered to be a very good parenting. ऐसा रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आपकी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है तो बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में आप उसको लाइफ को जीना सिखाते हो, अच्छे तरीके से जीना सिखाते हो. And then the third kind of parenting is called permissive parenting. इस permissive parenting में आप उस पेरेंट की तरह बिहेव करते हो. हम वो पेरेंट होते हैं जो कि बच्चे ने गलत किया तो भी ठीक है, बच्चे ने सही किया तो भी ठीक है. You are not paying much heed to the kid. You are not paying much attention to the life of a kid, to the decision of a kid, to the situation of a kid. Right? आप हर चीज में बहुत lenient है. This is also called a very lenient type of parenting, permissive parenting, जिसमें आप बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है होता है, आपका कोई रिएक्शन नहीं है, आप हर चीज में बहुत लीनियंट हो. मगर जब बच्चे को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना उसके लिए सही है या साउथ डायरेक्शन में जाना सही है, एंड एट द एंड में अगर वो नॉर्थ में गया और नॉर्थ में वो जाके फेल हो गया, तो आपका कोई हक नहीं होगा ये कहने का कि आप लाइफ में फेल क्यों हुए. And that is the only reason that you need to guide a child. So permissive parenting or lenient type of parenting is not considered a very good kind of parenting. And then the last type of parenting is ignored or neglected kind of parenting, where the parents are involved so much in their life that they do not have time for the child. When we are so busy in partying that we ignore that yes, my child needs to go to the school. मैं क्यों पार्टी करूं 2, 2, 3, 3, 4 o'clock तक? See, it's your life. You can do it. You can enjoy. But when I talk about parenting, I will definitely say कि ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी. See, if your child is coming back home at 3 a.m., do you really expect your child to get up at 7 a.m. and go to school at 8 a.m. and attend all the classes? हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बच्चे से. कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? आप पहले अपना 100% दो. So in ignored kind or neglected kind of parenting is considered the worst kind of parenting. और ये क्यों होगी? रीजन भी आप समझ लें. Permissive kind of parenting, ignored kind of parenting, authoritarian parenting and authoritative parenting इसीलिए होगी क्योंकि आप भी शायद अपनी लाइफ में उतने मेस्ड अप हो.
आप अपने बच्चे के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो और आप अपनी लाइफ की चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. You are thinking that you are enjoying, but at the end of the day, you are just getting rid of one of the negative emotion by doing certain actions, by getting involved in certain things. अगर आप lenient parent हो तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड है. हो सकता है कि आपकी पेरेंटिंग बहुत लीनियंट हो, बट ऐसा कम होता है. कि ज्यादा क्या होता है, आपकी पेरेंटिंग एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हुई होगी, बहुत कंट्रोलिंग पेरेंटिंग हुई होगी. तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करूंगा, गाइड भी नहीं करूंगा. जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा, जो उसकी मर्जी होगी करेगा. बट रिमेंबर, you have to control the life of the child till he is 18. और धीरे धीरे वो कंट्रोल छोड़ना है. चाणक्य, अगर आपने सुना होगा, चाणक्य ने भी बोला था ये, 15 साल तक अपने बच्चे को एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको नर्चर करो, एंड 15 इयर्स के बाद अपने बच्चे को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो. एंड दिस इज रिटन इन द स्क्रिप्चर, राइट? सो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी, हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है 15 इयर्स के बाद. यू नीड टू ट्रीट द चाइल्ड एज अ फ्रेंड. यू नीड टू डिस्कस थिंग्स. कैसे आप उसको रेडी करोगे आगे के लाइफ के लिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, think about yourself, resolve your own issues. If a person is practicing authoritarian parenting, permissive parenting, ignored kind of parenting, that means something is not right with me and it is reflecting on my kid. So do you really want your kid to be mentally unstable or socially unstable? Nobody wants that. Nobody wants that. तो अपनी चीजों को रिजॉल्व करो, अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो. मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहूं? एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड क्यों होता है? जब दो आइडियाज आपस में क्लैश करते हैं. दैट मीन्स देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. व्हेन देयर आर टू थिंग्स इनसाइड यू एंड देयर सेट्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, then you are frustrated, then you are aggressive, then you are controlling. When I am so confused with my life, I am not able to take any decision, I leave everything. Okay, जो होता रहेगा वो होता रहेगा, I will not interfere. So that is the permissive thing, which is again not good. And अगर ignored है तो there is something drastically wrong with you. So this is how we have to change ourselves to change the life of a kid. This is how. But at the end of the day, my question is, how many of us do really think that I am not able to raise my child well, or I am not able to do the justice with the parenting because there is some problem in me? Nobody thinks that way. Remember, nobody. हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि नो, हमने तो नहीं सिखाया, बट बच्चे ने पता नहीं कहां से सीख ली. Remember, maximum amount of time the child is spending with you. Certain things you need to pay heed when your child is growing. अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके बच्चे के ऊपर आपको ध्यान देनी है. Pay heed to these things, to the 4-5 stages I have just mentioned. क्या उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का बैलेंस है या नहीं है? उसमें इंफीरियोरिटी और इंडस्ट्री का बैलेंस है या नहीं है? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए. क्या उसकी आगे बढ़ने की विल है या नहीं है? कहता है कि मुझे बढ़ना ही नहीं है, विल ही नहीं है. इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है टिल द टाइम योर चाइल्ड बिकम्स अ टीनेजर. एंड व्हेन योर चाइल्ड बिकम अ टीनेजर, उसको रोल समझाना है कि नाउ learn from us because you are going to take over the role after 18.
Discuss things like a friend. What else you need to pay heed, to pay attention when your child is growing? Body language पर ध्यान दो. जब उससे बात करते हो, try to be a better listener than to be a better speaker. And most of the times we are good orators. Most of the times हम बोलते बड़ा अच्छा है, समझाते ही हैं उनको, बच्चा चुप रहता है. But at the end of the day, we don't realize that we have ruined something. We have shattered something in his life. And at the end of the day, every parent wants a very, very successful child with a good personality, with a good life. So we need to sow the seed for the same. उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, जहां करेक्ट करना है वहां करेक्ट करो, बट देन इट शुड बी इन अ वेरी बैलेंस्ड वे अगेन, not too emotional, not too logical. Don't be a critical parent all the time. Don't analyze your child all the time, which we do. We tend to do it. एक बच्चा उसको कैसे देख रहा है, हमेशा ये, जब भी आप अपने बच्चे को कुछ कहते हो, उसको ये सोच के देखो कि एक बच्चे की नजर से ये क्या है. जब मुझे बोला था तो मुझे कैसा लगा था, तो इसको भी कहीं ऐसे तो नहीं लग सकता, तो आई हैव टू चेंज माई टोन. You have to have a firm tone. When you want to change certain things in your child, you need to have a firm tone, but not very rash. Do not be rash with your kid. अपने बच्चे के साथ फिजिकली अब्यूसिव कभी मत रहो, हाथ मत उठाओ, वर्बली कुछ उल्टा सीधा मत बोलो. I keep on getting the children or even adults, even teenagers, जो कहते हैं कि पेरेंट्स ने ऐसा बोला, आई नो दैट दे लव मी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट जब उन्होंने कहा था कि मैं घर से बाहर निकाल दूंगा. सी, द टाइम इज गॉन. दिस जनरेशन इज डिफरेंट. They have access to everything and anything and everything. They have access to different emotions. We have understood the emotions late, quite late, just because इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था. आज की डेट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और आपका बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है. जब चीजों को जल्दी समझने लगता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की ज्यादा बढ़ जाती है. यहां पर बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, टाइमली करेक्ट करो, टाइमली करेक्ट करो. कुछ चीजें जो इग्नोर हो सकती हैं उनको इग्नोर करो. Do not be a very critical parent all the time. Try to see the whole thing from a third perspective. अगर चीजों को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी. एंड देन बहुत ज्यादा चीजें इग्नोर भी मत करो, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. एंड देन एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट फिर बड़ा होता है. डू नॉट वेट फॉर द ब्लास्ट. आपको लगता है ये चीज यहीं करेक्ट हो सकती है, उसको वहीं करेक्ट करो, वेरी पोलाइटली. Try to be a friend to your kid after the age of 11, when your kid is able to understand things, and at the age of 15. उसको उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करो. जब भी वो डिसीजन ले तो उसको डिसीजन का प्रोज एंड कॉन समझाओ, बट कभी उसके डिसीजन को भी अग्री करो. अपने बच्चे को सप्रेस मत होने दो. अगर वो आपसे सप्रेस होगा, रिमेंबर, या तो वो बाहर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा या वो बाहर बहुत ज्यादा सप्रेस होगा. दोनों ही ठीक नहीं है. एंड वी ऑल वांट आवर किड्स टू बी सक्सेसफुल. अगर बच्चे को, आपको बच्चे के इमोशन को समझना है, अपने चाइल्डहुड को विजिट करो, ऑन एंड ऑफ करो. बट रिमेंबर, इफ योर चाइल्डहुड इज वेरी ट्रॉमेटिक, approach somebody and get this trauma resolved. अगर आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिजॉल्व कर पाएंगे तो अपने बच्चे को अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के इंप्रेशंस नहीं देंगे, और नहीं देने चाहिए. दे डोंट डिजर्व इट.
They deserve a happy childhood. And you all want to give them a happy childhood. So that's all from my side. Now the forum is open for discussion. If there are any questions, please unmute and ask. Anything you want to discuss, please unmute and ask. Yes. Anything. If you have anything, please go ahead. Or else, Disha, we can discontinue. Just wait for 1 minute. I think most of the people are having some sort of network issues because this thing, many people were there in the beginning, but now many got disconnected. It's okay. But then, Disha, why you have set a time? I think there is a No, time. ma'am, I didn't. Actually, for Zoom, the unpaid version, they have this time limit. No, it is not like that. Yes, ma'am, now they have changed it because earlier it was not like that. I also remember, but now the moment there's like 1 hour, not 1 hour, 40 minutes goes, it just stops on its own. 45 minutes is the limit. Not an Disconnect issue. at But then we 45. were doing it on Google Meet. No, next time onwards, please do it on Google Meet, right, Disha? Yes, ma'am. Next time onwards, we'll do This it. time there was some problem. Next time, please do it on Google Meet itself. Okay, ma'am. So if there are no questions, we can just finish the meeting, right? Yes, ma'am. Thanks everyone for your patient listening. Thank you and have a nice day.